So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. So आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी के स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हम समझेंगे कि जीएसटी क्या होती है, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम स्लैब्स ऑफ जीएसटी की बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने इनडायरेक्ट टैक्स की शुरुआत की थी, तो वो पहले पढ़ के आए, तभी आपको जीएसटी वाला जो ये लेक्चर है और क्लैरिटी के साथ कहीं ना कहीं समझ में आएगा। So before starting the lecture, I hope you have subscribed the channel and hit the bell icon. The kind of support that you're giving me, जिस तरीके से आप कमेंट कर रहे हो, मेल कर रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप में अपना अपने आप को दिखा रहे हो कि मैं हूँ, और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हो। सो द एफर्ट्स दैट यू आर मेकिंग, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दैट एंड आई होप आप इस तरीके से सपोर्ट मुझे फ्यूचर में भी करोगे और इस चैनल को आगे बढ़ाओगे। सो लेट्स टॉक अबाउट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, सो सबसे पहले तो सिंपल सी चीज़ जो आपको याद रखनी है अबाउट जीएसटी। जीएसटी is a single tax that is added, you know, uh, or I would say applied to the sale of goods and services across India. पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, लाइक पहले क्या होता था, जब ओल्डर टैक्स सिस्टम की बात करें तो वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, बहुत सारे टैक्सेस थे। बट अभी क्या किया, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और क्लियर बनाने के लिए एक सिंगल टैक्स कर दिया, अप्लाई कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज की सेल के लिए, एंड दैट इज जीएसटी. So it's a single tax that is applied to the sale of goods and services across India. It has replaced many older taxes like VAT, service tax, and excise duty to create one uniform system. It ensures that the same tax is applied everywhere in the country to create that uniformity. So, in order to create that uniformity, which was not the case earlier because of so many taxes which were levied on the goods and services like VAT, service tax, excise duty, and so many more. But now we have this one single tax only. So that definitely improves the process also, because same tax is applied everywhere, and this creates that uniformity, that synchronization, and it really makes it simpler for the businesses and consumers also, for the government also, to collect those. So I hope you got an idea about it. Now you also have to understand this thing, that GST is charged at every step where value is added to a product. When I say value addition to the product, हम वैल्यू कब ऐड करते हैं प्रोडक्ट में? जब भी कोई एक पूरा प्रोसेस होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, जहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल हम उसको आगे बढ़ाते हैं, एंड देन वी अल्टीमेटली मूव टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू वेरियस चैनल्स, यू नो। सो जब भी हम किसी प्रोडक्ट में, किसी गुड में हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं कुछ, तब तब हम कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट में हम कह सकते हैं कि हम उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी आर डूइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग, वी आर एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट. वी आर डूइंग पैकेजिंग, वी आर again adding value to the product. We are doing marketing, we are doing packaging, selling. So in all of these processes, what we are doing is we are actually adding value to the product. So whenever we are adding value to the product, we can apply GST to it. So GST is applied only to the increase in value at each step. That is something which you have to remember, that this is only applied whenever value is added. So value added at each stage is tax. And that, somehow really prevents the older system, because older system में ऐसा नहीं था. वहां पर हमें टैक्स ऑन टैक्स देखने को मिलता था. यहाँ पर क्या है कि जब वैल्यू ऐड हुई है तभी टैक्स ऐड होगा. दैट्स समथिंग विच इज रियली पावरफुल अबाउट जीएसटी, आई वुड से. Now comes the segment, so we can say the parts of GST. So there are three parts of GST. One is CGST, which is Central Goods and Services Tax. Then SGST, which is State Goods and Services Tax, and then we have the Integrated Goods and Services Tax too.
So what are these? When we say CGST, so it really goes to the central government. Then we have this SGST, it goes to the state government. And then we have this integrated GST, like interstate transaction. Like for example, if you're doing interstate transaction, so here in this case, goods or services are sold between different states, and therefore it is collected by central government. So I hope this is clear to you about basically the structure of it. Okay, so it consists of SGST, CGST, and IGST. Great.